हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैप्टर टीयर्स ऑफ जॉय। चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। आई ले इन माई बेडरूम स्टेरिंग एट द मोशनलेस फैन हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग above. Electricity gone, but the cool breeze through the windows works better than the fan. Despite that, sweat drops cover my body. Sweat drops, sweat मतलब पसीने की बूंदें. The pain in both my legs makes me mad. 2 months back, a slip in the corridor had gifted me broken bones in both legs. ये कॉरिडोर में स्लिप कर गई थी, दोनों हड्डियां टूट गई दोनों पैरों की. Amidst the pain, the fingers of my left hand are wrapped around the cell phone. The pain in my heart coupled with the unbearable pain in my legs make my grip over it even tighter. पेन के बारे में, दर्द के बारे में बता रहे हैं कि भाई पैरों में कैसा दर्द है, उंगलियों में. आई एम एक्सपेक्टिंग ए कॉल फ्रॉम माई सन इन लॉ. सन इन लॉ से एक कॉल की उम्मीद की जा रही है. अ कन्फर्मेशन कॉल फॉर मी टू एड माई सेल्फ टू द ग्रुप ऑफ ग्रैंड मदर्स. द मोस्ट प्रीशियस पर्सन इन माई लाइफ, माई मुन्नी, इज एडमिटेड इन द सिटी हॉस्पिटल फॉर अ डिलीवरी. तो इनकी बच्ची है, वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है डिलीवरी के लिए. My kid is just 19 years old and is going to be a mother. I know it is not news in today's world, but for me it is. An accident had taken away my husband when Munni was 7 years old. That time I had thought that my life was over, but it was not. Without much education and very stable employment, I had taken pains all these years to raise Munni, giving her every comfort a middle class would expect. तो अपनी बच्ची को पाला. इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में जब इनकी बच्ची मुन्नी 7 years old की थी. But I could not send her to college through she was a good student who aspired to study more. जबकि वो, though she was a good student, अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन मैं कॉलेज उसको. When my pretty daughter turned 18, the proposal from this decent employed guy, my son-in-law, had come. It changed my Munni's life and with it my life too. She moved with her husband to the city and I live alone in the cheerless house. Munni, my only cheer, is far away. एक ही लड़की थी, वो भी दूर चली गई, जिसकी शादी हो गई. My son-in-law had promised to send her to college, but soon she became pregnant. It was not a mistake too, and even now he assures me that he will send her for study after child is born. I don't know, but there is no reason for me to doubt my son-in-law. For my Munni, he is a good and loving husband who takes good care of her, and my daughter is happy with him. That automatically makes me glad, and sometimes her age gives her fear, which she lavishly gives me too. Whenever she knows that generosity, I become weak like a one-armed boxer and life scares the hell out of me. तो सिचुएशन बता रही है कि उसके हस्बैंड ने कहा था कि वो आगे पढ़ाएगा, लेकिन अब वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसके बाद जब बच्चा होगा उसके बाद पढ़ाने की बात की गई है. These days I can't move myself without my old aunt's help. So taking care of Munni seemed something unthinkably. So she had to plan her delivery in the city itself. They have hired someone to take care of her. As travel has been impossible for both of us. I have not seen my daughter in months. Since then, our only contact was through the cell phone. She calls me umpteen numbers of times for sharing even her most silly doubts and fears. I understand how much impact a mother can make on her children. My words loaded with love strengthen her, give her courage to face things for which a woman is destined. That is when I realized how important a cell phone is in my life. तो पता लगा भाई सेल फोन की कितनी जरूरत है, चल फिर सकते नहीं है. I don't know how I would have managed without the cell phone, which means not just the connection with my only daughter, for whom I have lived so far and for whom I am still living. Once she asked me, Ammi, what if my child is still born? When I went for checkup, another girl I met there told me her first child was stillborn. Always I asked her to be positive, to pray and to think about such matters. Another time she asked Ammi, what will you do if I die? She with that question
had taken my God life at every moment. Her fears always make me fragile. तो बच्ची पूछती कि अगर बच्चा मरा हुआ हो गया है ना, और या फिर मेरी मौत हो जाती इस दौरान, तो फिर क्या होगा. I had become her mother at a younger age than hers. मैं तो उसकी माँ बन गई तो उससे भी कम उम्र में. But I had not given much thought about it then. I was just excited about the baby, my baby, even if I had fears. There was none to support me. My mother was a harsh one. I was ignorant. Sometimes ignorance helps. When my date was due, fear had gripped me, but soon I had become extremely happy seeing my cute baby, my Munni. But Munni's question had made me panic. I can't imagine losing her. I would rather die with her. I had cried, had scolded her for asking that. I don't know what other mothers think, but I am more concerned about my daughter and her life than the child's. It may sound selfish, but it is the truth. Childbearing is not a big event as lakhs and lakhs born each day, but even the most mundane thing becomes the most important news when it comes to our children or close people. That is what it is all about. But again, I did not know how to pacify her. I just had told her nothing like that would happen. तो बच्चे तो लाखों पैदा होते हर दिन, लेकिन अगर अपने आसपास हो या अपने कोई खास हो तो काफ़ी में खुशी होती है. But the fear which found home in my heart from that moment has remained there like a uninvited guest. What would I do without her? अब मैं क्या कर सकती हूँ उसके बिना. A girl's best friend is always her mother. But taking our circumstances into consideration, I am unable to be with her when she needs me the most to stay away all her fears. I cry over my helplessness. I know it does not help, but that is the only thing I am able to do now. I find my cell phone as one of the most treasured possessions. The thing that makes me alive, connecting me with my life, with my breath, which makes me forget all the pain with her sweet voice. तो उसकी जब आवाज़ आती ना फ़ोन से तो सारा पेन, सारा दुख दूर हो जाता. I check the cell phone, nothing new. I don't want to call and disturb them. As time passes, fear gains strength. Bad thoughts pass through my mind. I try to remain calm, but I can't. I am no saint to win over all my. I am no saint. कोई सेंट नहीं, साधु नहीं है. आई एम एन ऑर्डिनरी लेडी. तो बार बार थॉट आ रहा है कि फ़ोन नहीं आया इतनी देर से, क्या हुआ डिलीवरी का. बट एज माई थॉट्स वेंडर, आई गेट टू नो दैट इफ आई डोंट फाइंड पीस एंड ओवरकम माई फियर माई सेल्फ, none can help me do that. I think about my life. I had gone through many bad times while living the life of a widow without anyone's support. But I had overcome all those hurdles, had led a model life. I had raised a girl, had given her education as far as I could, and had given her in marriage to a good man. I, who have come all this way, am now afraid of losing my child. इतनी सारी तकलीफें झेलने के बाद अब मैं इस बात से डर रही हूँ कि मेरे बच्चे खो ना दूँ. But does worrying help? Will our fears change anything? Will it bring us desired results? I think. I try to be strong. I try my best to think good thoughts. With no one around, I close my eyes. I try to bring all nice thoughts, all my success to my mind. I try to pray, but I'm unable to concentrate. तो बार बार ध्यान वहीं जा रहा है कि फ़ोन नहीं आया इतनी देर से, और देखते हैं क्या होता है. ये बस थॉट चल रहे हैं अभी, क्योंकि इनके तो चोट लगी है पैर में, ये कंप्लीटली बेड रेस्ट पर है. I remind myself that everyone has to face what life brings, good or bad. Everyone has to face their demons no matter what. I clutch the cell phone more tightly with the positive thoughts in my mind. Even that clutch over the phone gives me a feeling that I am overcoming my fears. The cell phone in my hand vibrates. अब cell phone क्या हो रहा है? Vibrates होता है. And then it starts ringing. I know my heart is not just beating, but it is drumming. I listen holding it to my ear. Ammi, my son-in-law's voice. जो दामाद थे उनकी आवाज़ आती. हाँ. I realize my voice has choked in my throat. God bless us. It is a baby girl. Both Munni and baby are healthy and fine. Be happy, Ammi. तो बोले ये लड़की हुई है. I wanted to thank God, but no voice came out of me. Ammi, you there? बोले क्या तुम हो? हाँ बेटा. I am hearing.
God has shown mercy. After a brief talk about Munni and kid, I put the cell phone down. My little Munni has become a mother of another girl. मेरी छोटी बच्ची जो मुन्नी है वो माँ बन गई एक दूसरी लड़की. Maybe someday she also will go through the tension which I have undergone. But again, maybe not. At the time, girls can be much bolder than the present times. Tears flow down my face, tears of joy. The same tears I had 19 years ago when I saw my Munni's face for the first time. The uninvited guest has left my heart. I am sure it has left my daughter's heart too. My daughter has me to drive fears away for me. I have to do it myself. अनइनवाइटेड गेस्ट कौन है? फियर, डर बना हुआ था कि क्या होगा क्या होगा. एक्सरसाइज में देखते हैं, डिस्पाइट द डिफिकल्टीज द राइटर फॉट वेल फॉर द साइकिल ऑफ लाइफ. राइट इन ब्रीफ अबाउट हर डिफिकल्टीज एंड हाउ शी मैनेज्ड. तो जो मुन्नी की मदर है उनकी डिफिकल्टी और कैसे उन्होंने मैनेज किया यहाँ लिखना है. ओके, ये भी आपको नोट ही करना है. यहाँ पर मॉडल वर्ब्स आपको दिख रही हैं. कैन, कुड, मे, माइट, वुड, मस्ट, शैल, शुड, इनका यूज कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं. अगर कुड की बात करें तो जो वीक पॉसिबिलिटी वहाँ कर सकते हैं. माइट में ओनली पॉसिबिलिटी के लिए. अगर शुड का यूज हो रहा है तो एडवाइस, सजेशन के लिए. मे का यूज रिक्वेस्ट के लिए. कैन का यूज एबिलिटी के लिए. मस्ट का यूज इंटेंशन या प्रॉमिस के लिए. मस्ट का यूज कंपल्सन या नेसेसरी के लिए. शुड का यूज एजम्पशन या डिटेक्शन के लिए भी कर सकते हैं. राइट. तो ये सारी जो होती हैं मेन वर्ब्स के साथ यूज होती हैं, ये सब हैं अपनी मॉडल वर्ब्स. अब हमें यहाँ पर क्या करना है? सुटेबल मॉडल वर्ब्स का यूज करना. तो यहाँ पे क्या करेंगे? यू ओबे योर मदर. यू मस्ट ओबे योर मदर, ये तो नेसेसरी है. यू प्लीज टेल मी वेयर टू फाइंड मेडिसिन ऑफ. तो कुड यू प्लीज कर सकते हैं. आई स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, तो ये तो एबिलिटी हो गई. आई कैन लगाएंगे. वी इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स अबाउट द एक्सीडेंट, तो ये ड्यूटी की बात है. तो ड्यूटी किससे आएगी? तो शुड से आ जाएगी. इट इज पास्ट 5:30, ये डिडक्शन है. डिडक्शन के लिए क्या? मे. या फिर आप शुड भी लगा सकते हैं, दैट इज ओके. ऊपर आपने देखा ही था. आगे करते हैं क्वेश्चन आंसर. द कूल थ्रो द विंडोज बेटर देन द एयर. तो ठंडी आवाज होती धीरे धीरे चल रही, दैट इज ब्रीफ. एन एक्सीडेंट हैड टेकन अवे माय हस्बैंड. Whenever she shows that generosity, I became one-armed boxer. Weak. Our only contact was through क्या? Phone, cell phone. A girl's best friend is always her mother. क्वेश्चन आंसर नोटबुक में करना. फिल इन द ब्लैंक आप ये दोबारा चैप्टर से करेंगे. और ये है यहाँ पर सेंटेंस हमें पढ़ना है, फिर क्या करना है? ईडियम्स को मैच करना है. ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं. सी आई टू आई यानी कि आमने सामने. इजी ऑन द आई, कास्ट एन आई ओवर. और टर्न ए ब्लाइंड आई. टर्न ए ब्लाइंड आई मतलब होता है कि इग्नोर कर देना. राइट. टर्न ए ब्लाइंड आई हो जाएगा तो इग्नोर समथिंग दैट यू नो इज रॉन्ग. और बहुत ही इंटरेस्ट से आप किसी चीज को देख रहे हैं तो आप कर सकते हैं कास्ट एन आई ओवर, या फिर बी ऑल आइज भी हो जाएगा. टू लुक समथिंग ब्रीफली, तो यहां पर ये कर लेंगे हम लोग. इज देन टू लुक एट, इजी ऑन द आई, और सी आई टू आई एग्री विद ईच अदर. हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक यू.